Hi guys, welcome back to the channel, and after a long time I'm shooting with the Sony Alpha 6000. So far I've been shooting with primarily the iPhone that I have, which is the iPhone 12. अब तो 14 का ज़माना आ गया, but शरीर में एक्स्ट्रा किडनी नहीं है तो मैं नहीं ले सकता, वरना शायद मैं सोचता. Anyways, jokes apart, so this video, in this vlog I'm gonna tell you about a subtle mod that I've done on my bike. Yes, I still ride the bike, don't worry. It's just that I'm not touring for a long while right now because of certain reasons. But bike है, bike मैंने बेच नहीं दिया, तो bike very much है. And bike से याद आया, cold start problem का क्या हुआ. आप में से बहुत लोगों ने पूछा था ये. Cold start problem is still there. I'm living with it. I don't have time and I don't have much of patience left to chase around the KTM service centers. I know good mechanics, like non-KTM technicians, aftermarket you can say. But then again, honestly speaking, time नहीं मिलता है because Monday to Saturday office. और इन दिनों मैं जो कर रहा हूँ, एक दिन बाइक एक दिन गाड़ी, जैसा मैंने लास्ट मेरे गाड़ी वाले व्लॉग में बताया था, जिसमें मैंने गाड़ी का डिलीवरी लिया था, उसमें मैंने बताया ये चीज़ कि मैं ऑल्टरनेट डे में कर रहा हूँ, सो दैट द फ्यूल एक्सपेंस इज स्टिल इन चेक. ऑल्सो गाड़ी का जो रनिंग इन पीरियड हो रहा है वो भी कंप्लीट हो जाए. तो बाइक में मैंने क्या चेंज किया एंड क्यों किया. सो आई ऑलवेज वांटेड टू गेट अ टॉलर विंडशील्ड ऑफ माई बाइक because the stock windshield is not that I am facing a lot of wind buffeting problem or anything like that. No, it has been serving me absolutely flawlessly. It's just that वही मन में खुजली होती है ना, तो कि बाइक में कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए. At the same time it doesn't hamper any bit of the bike's performance, and engine में तो कोई छेड़छाड़ करना ही नहीं है. तो keeping all these things in mind, I wanted to get a taller windshield. Not only it gives a big bike look to the bike, and at the same time it blocks the wind noise better than the stock one. But इसमें एक caveat है. I mean, I'm not sure whether I have done it in a wrong way or not. I don't think so because मैंने इसमें बहुत time दिया था इसको install करने में, DIY किया, which I'm not very good with that. So पूरा मेरे को काफ़ी time लग गया actually because I was facing a lot of problems, and honestly speaking इसका बहुत ज़्यादा helpful videos जिसमें मेरे को जो दिक्कत आ रही थी वो उसका आंसर मिले, ऐसे वाले वीडियोस मेरे को ऑलमोस्ट ना के बराबर नहीं मिले. जो भी मैं सोच रहा था, जो भी मैं वीडियो देख रहा था एज अ गाइड, एग्जैक्टली जहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी उसी जगह पे बंदे ने कट मार रखा है. सो बिकॉज ऑफ दैट इट डिडंट हेल्प मी. सो आई थॉट ऑफ लाइक स्पेंडिंग अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम. व्हेन आई से गुड अमाउंट ऑफ टाइम, it was one fine Sunday. I started it around 9:30-45 in the morning, and by the time I somewhat satisfactorily finished it, it was almost 2:45. बीच में मैंने इधर उधर और भी काम किया है, मतलब घर के काम and all that stuff, but this was the main thing. Caveat जो मैं बता रहा था, everything looks fine. By looks wise आपको कुछ पता नहीं चलेगा. The thing is that ये जब मैं चला रहा हूँ ना बाइक, थोड़े से लो RPM में कुछ ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है, and I have no idea why that is happening. I checked all the screws, the nuts and the bolts and everything. I double checked with the manual that is provided with the company, by the company, and I checked with the videos available on website, pictures on Google. कुछ बाकी नहीं रखा मैंने, but visually everything matches. But I don't know why this vibration comes in. एक मन में वो डर रहता है कि यार अगर खुल जाए, गिर जाए, फट जाए, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, टच वुड. इट हैज़ बिन परफॉर्मिंग प्रीटी नाइसली. लुक्स वाइज तो काफ़ी अच्छा लग रहा है. एक बिग बाइक, वो मल्टी स्टडर वाली फील आ रही है, या तो कह सकते हो टाइगर 900 वाली फील आ रही है देख के. मैंने इसमें ज़्यादा कुछ स्टिकरिंग नहीं करी है, एंड आई वेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर मॉडल, and it was not available in the meantime. I mailed this particular company, they didn't have it in stock, and I almost gave up hope. Thanks to one of my subscribers or Instagram friends, जो भी है, thanks to my social media friend I can say, he actually pointed it out and said that it might be available. So I immediately checked the website, it was available, and I ordered straight away. And this is the version 2 I believe, because इसमें dual texturing है, आपको दिख जाएगा सारे वीडियो में. तो चलिए देखते हैं and let's check.
carefully. Just make sure that this carbon racing logo is like this, and this is how it would look. ऐसे रहेगा. This is an angle adjuster which is all provided inside the kit. When you buy this, you need to place it here or here. मैं ऊपर ही लगाऊंगा ऐसे. इसका पर्पस ये है कि जो नया विंडशील्ड है उसको हैंडल बार या मिरर से टच ना होने देना, and also give you the proper angle. So it's all machine cut, so you can see it's all perfectly aligned. Now these old rubber washers that I removed from the old visor, जो कि यहाँ पे लगे हुए थे, ये अब जाएंगे यहाँ पे. So hopefully guys, you found this particular video helpful, you found it entertaining, and if you are an Adventure 250 owner or a 390 owner, if you want, you can order this, because as I checked it last, it was available on the website. आप check कर लो अब आज के डेट में available है या नहीं, क्योंकि बीच में काफ़ी टाइम ये सोल्ड आउट दिखा रहा था. तो अगर आपको चाहिए तो फटाफट से वेबसाइट चेक करो और ऑर्डर कर लो. या दैट्स प्रीटी मच इट. यही बताना था, यही दिखाना था इस वीडियो में. और बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ज़रूरी लगे तो शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो. टिल देन, व्हाट शुड आई से, राइड हार्ड और ड्राइव हार्ड. Ride/drive hard, Ride/drive responsibly. Take care, stay healthy. Ta-da.